दोस्तों चलिए मैं आपको आज एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। मैंने आज से 1 साल पहले एक स्टॉक को खरीदा था 100 रुपये पे, और आज के टाइम पे वो स्टॉक बढ़ के 200 रुपये पे चला गया। मैंने एज ए रिटेल इन्वेस्टर क्या सोचा कि ये स्टॉक मुझे 2x रिटर्न दे चुका है, तो क्या मुझे इसको बेच देना चाहिए। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया और मैंने क्या किया, स्टॉक को बेच दिया, क्योंकि सिर्फ उस स्टॉक ने मुझे 100% का रिटर्न दिया था। आप भी बहुत से रिटेल इन्वेस्टर यही करते हैं। आप सोचते हैं कि स्टॉक ने मुझे 100% रिटर्न दिया, 50% रिटर्न दिया, और उसको बेचने के बारे में सोचते रहते हैं और बहुत बार कंफ्यूज भी होते हैं कि हमें एग्जिट कब लेना चाहिए और कब उस स्टॉक को बेचना चाहिए। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लेके आए हैं आज का वीडियो, जहां पे हम आपको बताएंगे कि अगर कोई स्टॉक आपको 100% रिटर्न देता है और रिटर्न देने के बाद आप उसको बेच देते हैं, उसके बाद वो और ऊपर चला जाता है तो आपको बुरा लगता है। तो पूरे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको समझाने का ट्राई करेंगे कि आपको स्टॉक के अंदर कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर वो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न भी दे देता है तो आपको वहां पे एग्जिट करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स के बारे में और उनके ऊपर करेंगे वायरल रिएक्ट और बताएंगे कि उन सुपरस्टार इन्वेस्टर्स ने या एक्सपर्ट्स ने क्या बोला है किसी भी स्टॉक से एग्जिट करने के बारे में। तो दोस्तों वायरल रिएक्ट में हम आपको दिखाएंगे 3 क्लिप्स अलग अलग एक्सपर्ट्स के, जहां पे सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट्स होंगे मोनीश पबराय और सेकंड होंगे अश्वथ दामोदरन। तीसरा हम बात करेंगे हार्वर्ड एस मार्क्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मनीष पबराय की। तो मनीष पबराय एक इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर हैं, बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं। इसके अलावा फिलेंथ्रोपिस्ट भी हैं। अगर मैं बात करूं तो उनका एक अपना फंड भी है जिसको वो रन करते हैं और इंडिया के एलीट इन्वेस्टर्स के अंदर भी उनका नाम आता है। चलिए आप सबसे पहले इस क्लिप को देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि वो क्या कहना चाहते हैं कि स्टॉक से आपको एग्जिट कब और कैसे करना चाहिए। So one of the things that Nick Sleep talked about was that he said, look, Walmart went public in 1970. And from 1970 till now, which is more than 50 years, the Walton family has held the stock. They haven't sold, they've just held the stock. But there have been no public market investors that have held the Walmart stock for this 50-year period, or even a 40-year period, or even a 30-year period, maybe even not even 20 years. You might be able to find some 20-year holders. And so what Nick Sleep asked is that, if you owned Walmart stock in 1970 or 1980, what exactly was the facts that caused you to sell it? And it's an important question to try to answer. And the flip side of that same question is that if you owned a Kmart stock, maybe 20 or 30 years ago, what caused you to keep it? So Kmart, on a number of metrics, was a very cheap stock, but it was a business in decline. And Walmart, on a number of metrics, was an expensive stock, but it was a business that was growing and going from strength to strength. So I used to always invest until here with the idea of buying things well below what they were worth and then selling them when they got to full price or maybe a little bit over full price. So kind of buy a dollar bill for 40 cents or 50 cents or 30 cents. And then as it approached a dollar, get rid of it and find another 40 cent or 50 cent dollar. And that's worked quite well. I mean, I think at Pabrai Funds, every dollar we started with turned into about $14 in the last 21 years. And that's after fees and expenses. But it's kind of a inefficient kind of treadmill way to go through life. What is vastly better is if you can identify great businesses which have great economic characteristics and very long runways ahead and hold those businesses for a long time without being particularly concerned that they may be somewhat overvalued. If it's a really good business, it will probably get optically overvalued periodically, maybe for a long time. And Nick Sleep, in one of his recent emails to me, said to me, he said that, Monish, the best investors
weren't investors at all. They were entrepreneurs who never sold. And so the idea is that we should think of ourselves as if we were the founders or the family that owns or runs the business and have the same mindset as them. And as long as the business is improving, as long as the moat is widening, as long as things are getting better, we shouldn't be focused on valuations and such. Of course, if things get egregious, if you're a family who owns GameStop right now, you should have sold a while ago. But beyond that, I think that, so that's a pretty significant mindset shift for me. But I think it makes life easier. I think the returns are better. The taxes go way down. So I've gradually, started making this shift in my portfolio. दोस्तों यहाँ पे मनीष पैबराय जैसे कि इस वीडियो में आपको बताते हैं कि कोई भी एक अच्छा इन्वेस्टर जिसका बेस्ट इन्वेस्टर बोलते हैं वो एक इन्वेस्टर नहीं होता, बल्कि वो एक एंटरप्रेन्योर होता है। अपने आप को उस कंपनी के मालिक की तरह सोचता है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचता है जब भी वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट करता है तो। और इस वीडियो के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है वॉलमार्ट का। उसका एग्जाम्पल देके आपको समझाने का ट्राई किया है कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए। दोस्तों वॉलमार्ट के बारे में तो आप जानते ही हैं, जिसका एग्जांपल मनीष पैबराय ने भी लिया और उन्होंने यहाँ पे बताया कि वॉलमार्ट 1970s के अंदर लिस्ट हुआ था और पिछले 50 साल से वॉल्टन फैमिली उस स्टॉक्स को होल्ड करके बैठी हुई है। तो वॉल्टन फैमिली ने जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था इसके स्टॉक्स के अंदर, तो वो एक एंटरप्रेन्योर की तरह किया है और एज अ एंटरप्रेन्योर उसको समझते हैं, उसको रन करने के लिए। लेकिन जब भी हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, अगर उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होता तो वो 5 साल के लिए करते हैं, 10 साल के लिए करते। बल्कि यहाँ पे मनीष पैबराय आपको बताना चाहते हैं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, अगर किसी कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, उनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और आने वाले टाइम में वो ग्रो कर सकती है, तो आपको उसमें से एग्जिट करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। दोस्तों एक स्टॉक क्या होता है? एक स्टॉक एक बिजनेस होता है जो कि एक कंपनी अपने बिजनेस को रन करती है, जिसको समझाने के लिए मनीष पैबराय ने भी यहाँ पे बोला है कि अगर आपको किसी भी एक अच्छे बिजनेस को ढूंढना है तो उसके लिए वो आपको उसकी इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना चाहिए, कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल को देखना चाहिए और इसके अलावा कंपनी की मैनेजमेंट को देख के इसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में डिसाइड करना चाहिए। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव एज अ फाउंडर ऑफ दैट कंपनी सोचना चाहिए कि कंपनी आने वाले टाइम में कैसे ग्रो करेगा। और अगर कोई कंपनी पिछले 10-15 साल में अच्छा परफॉर्म करती है, कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इंप्रूव हो रहा है, कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो आपको कंपनी के वैल्यूएशन की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए उस स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मनीष पैबराय का ये क्लिप आपको काफी अच्छा लगा होगा और आपको काफी इंसाइट्स भी मिले होंगे। चलिए बात करते हैं सेकंड एक्सपर्ट की, जिनका नाम है प्रोफेसर अश्वथ दामोदरन। तो इनके क्लिप में आप देखेंगे कि वो क्या बोलते हैं कि जब कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है तो आपको क्या करना चाहिए। चलिए पहले देखते हैं उनका ये क्लिप। I think it may have been in the little book of valuation, which I read recently, which is terrific. You wrote that it's really important not to budge on first principles when it comes to investing. And I think you had explained at some point that was why you've owned Amazon about 4 different times, and then you had to keep selling it when it became too expensive for you to justify owning it, which some people would criticize because they would say, look, you found a great business, just hold it, just keep it. And I wondered if you could talk to me about some of these key tenets for you. What are the first principles that are at the heart of the Aswath Damodaran way of approaching the investment world? No, I start with the presumption that each of us needs to find an investment philosophy that best fits us. There's no one best philosophy. That's why when you read books on Warren Buffett and Peter Lynch and you try to do what they do, not surprisingly, almost everybody who tries doesn't do what they do. They don't earn those returns because it's not just copying the way they pick stocks. It's a psychological profile you need to kind of pull that investment philosophy off. So I've spent 40 years of my life trying to figure out the philosophy that fits for me. You still have to keep and go back because sometimes you realize there are things you're doing that don't fit your makeup as a person. I'm a believer in value. I have faith that every asset has value. I have a faith that I can try to estimate that value. And I have faith that at some point in time, the price will adjust to value. Keywords here are faith. The essence of faith is, if you ask me for proof, I have zero proof that I can offer for all 3 propositions. But my investment philosophy is animated by those 3 faiths. So I believe if I can value something and I see a price and the value is much higher than the price,
that if I buy it at the low price, over time, the price will adjust to value. But if that's my faith, then that faith requires me to also act when the price goes above value. So if I buy something that's cheap and the price goes up 80%, well above my value, I revalue the company. Then if my faith led me to buy because something was undervalued, the same faith should lead me to sell when it's overvalued. That's why when people say I'm a value investor, I buy when something is cheap, but I always buy and hold. I say, well, how do you reconcile that contradiction in what you just told me? Because if you're a value investor, you buy things that are priced less than the value. But if you buy and just hold, what happens if the price goes up 10-fold, 20-fold, 50-fold? Because that doesn't seem to be an internally consistent philosophy. In my experience, when you have a philosophy that has internal inconsistencies, it eats into itself. Those internal inconsistencies come back and eat away at the core of your philosophy. So I've sold Amazon 4 times. And if you ask me, should I have held on? Absolutely. If I had the benefit of hindsight, you could always look back and say, I should have held Amazon. The first time I bought it was 2001, maybe held it all the way through 2022. And so I've left money on the table. But to me, that's a small price to pay to have a philosophy that stays consistent, so if you ask me to describe the philosophy, I can tell you with a straight face that, hey, I have a philosophy, you might not agree with it, it might not be the right philosophy, but I act consistently with my philosophy. दोस्तों इस क्लिप में प्रोफेसर अश्वथ दामोदरन बोलते हैं कि हर इन्वेस्टर की अपनी एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है। जो मेरी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो शायद आपसे अलग होगी और हर इन्वेस्टर की अलग इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है। आप किसी एक को दूसरे के ऊपर इंपोज नहीं कर सकते। और उन्होंने ये भी बताया कि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को जानने में काफ़ी टाइम लग गया, जिसके बाद उनको पता चला कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग से निकल के आती है। इस क्लिप के जरिए अश्वथ दामोदरन आपको ये समझाना चाहते हैं कि उनको लगता है कि हर एसेट की एक वैल्यू होती है और उस वैल्यू के हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए कि क्या आपको वो स्टॉक बाय करना है या वो स्टॉक सेल करना है। और वो बोलते हैं कि जब भी वो किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो वो उनकी वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं। अगर उसकी वैल्यू उसके प्राइस से ज्यादा होती है तो आपको वो स्टॉक को बाय कर लेना चाहिए। अगर उस स्टॉक का प्राइस उनकी वैल्यू से ज्यादा है तो आपको उस स्टॉक को सेल कर देना चाहिए। दोस्तों यहां पे वो बोलते हैं कि अगर किसी स्टॉक ने पिछले 10, 15, 20 साल में 50x का रिटर्न भी दिया है तो आपको टाइम टू टाइम स्टॉक की वैल्यू चेक करते रहना पड़ेगा, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू को देखते रहना पड़ेगा। और वो बोलते हैं कि अगर 50-60x रिटर्न देने के बाद भी अगर कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू उसके प्राइस से ज्यादा है तो आपको उसको बेचना नहीं चाहिए। अगर उनकी वैल्यू उससे ज्यादा है तो आपको बेच देना चाहिए। दोस्तों प्रोफेसर अश्वथ दामोदरन के बाद अब बात करते हैं हार्वर्ड एस मार्क्स की, जो कि अमेरिकन बिजनेसमैन हैं। इसके अलावा ऑक्ट्री कैपिटल मैनेजमेंट के को फाउंडर और को चेयरमैन भी हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं उनका क्लिप कि उनका क्या व्यू है कि जब स्टॉक बहुत बढ़ जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। So we want low price to value. How do you get low price to value? And the answer is low optimism. There are other ways to describe it. You mean looking for low overall optimism? Right. If in short, the things that everybody feels good about are likely to be the things that are high priced, and the things that everybody feels bad about are likely to be low price. So if you could find out that here's a stock, nobody thinks this company can ever have a good day, maybe there's a chance that it'll produce some favorable surprises and make you a lot of money. If there's a company like the Nifty 50 back in '68, everybody assumed literally, Tim, nothing bad could ever happen to these stocks. Then clearly there has to be so much optimism in the price that there can never be a favorable surprise. We make money from favorable surprises, and if the conviction of positive conviction is so high, then by definition there can never be a favorable surprise. So I think that this is a number one concept. चलिए दोस्तों बात करते हैं इस क्लिप की कि इसमें हार्वर्ड एस मार्क्स क्या बोल रहे हैं। तो वो यहाँ पे बोलते हैं सबसे पहले कि अगर आप किसी स्टॉक के लिए बहुत हाई प्राइस पे करते हैं क्योंकि वो स्टॉक आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो शायद आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। इसका ये रीजन है कि अगर सबको पता है कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करेगा तो जो अच्छी न्यूज़ है फ्यूचर की वो पहले से ही स्टॉक के प्राइस के अंदर डिस्काउंट हो चुकी होगी।
लेकिन यहाँ पे वो ये भी बोलते हैं कि अगर आप किसी स्टॉक को लो प्राइस के अंदर बाय करते हैं, लो प्राइस का मतलब है कि अगर उस स्टॉक का प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम है तो वहां पे ज्यादा प्रॉफिट बनाने के ऑड्स आपके फेवर में होंगे, क्योंकि अगर आने वाले टाइम में वो स्टॉक कुछ पॉजिटिव सरप्राइज देता है अपनी अर्निंग्स में, अपने बिजनेस में, तो उसका स्टॉक प्राइस एकदम से काफी ऊपर जा सकता है, जिसका फायदा डायरेक्टली आपको एज ए इन्वेस्टर हो सकता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्क्रीनशॉट दिखाता हूं जो कि हॉवर्ड एस मार्क्स ने बोला था। तो जैसे कि हम स्क्रीन में देख सकते हैं, ये कोट है काफी फेमस, इन्वेस्टमेंट रिस्क कम प्राइमरली फ्रॉम टू हाई प्राइसेस। जब प्राइसेस बहुत ज्यादा होते हैं तो इन्वेस्टमेंट रिस्क ज्यादा होता है, और जो प्राइसेस ज्यादा होते हैं दैट नॉर्मली कम्स फ्रॉम एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म एंड इनएडुकेट स्केप्टिज्म एंड रिस्क अवर्जन। तो वो इस कोट में बोलना चाहते हैं कि जब ऑप्टिमिज्म बहुत ज्यादा हो जाता है तो लोग रिस्क अवर्जन को पीछे छोड़ देते हैं, यानी कि आप अपने रिस्क एपेटाइट से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, ज्यादा रिस्क लेना स्टार्ट कर देते हैं, और उस टाइम पे लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो ये रिसेंट के कोट्स के बारे में हमने बताया और क्लिप के बारे में बताया वो हमारी आज की स्टोरी के साथ कैसे रिलेट होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हॉवर्ड एस मार्क्स भी ये बोलते हैं कि जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में देख लेना चाहिए। अगर कंपनी के अंदर वैल्यू है, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो आपको उसको बेचने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर वो नहीं है और स्टॉक इनफ बढ़ चुका है, उसकी वैल्यू कम है कंपनी के प्राइस से, और बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म है और लोग रिस्क अवर्जन पीछे छोड़ चुके हैं, तो शायद कहीं ना कहीं आपको वैसे स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वायरल रिएक्ट वीडियो, जहां पे हमने आपको 3 एक्सपर्ट्स के एक क्लिप्स को दिखा के उसके ऊपर रिएक्ट किया और आपको समझाने का ट्राई किया कि जब स्टॉक बढ़ जाता है तो आपको एज ए इन्वेस्टर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, बात हमेशा वैल्यू इन्वेस्टिंग की ही की जाती है कि हमेशा सजेस्ट किया जाता है, अगर आप किसी भी क्लिप को देख लें, किसी भी इन्वेस्टर के व्यूज को पढ़ लें, तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि आपको कंपनी के अंदर एज अ ओनर इन्वेस्ट करना चाहिए, अपना बिजनेस समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उसकी वैल्यू को देखना चाहिए। जब उसकी वैल्यू उसके प्राइस से ज्यादा हो तो आपको डेफिनेटली वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और हमेशा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में स्पेकुलेशन करेंगे तो आपके लॉस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा जब ऑप्टिमिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लोग बहुत ज्यादा रिस्क लेने लग जाएं किसी स्टॉक के अंदर, अगर आपके पास वैसा कोई स्टॉक है तो आपको वहां से एग्जिट भी कर लेना चाहिए सही टाइम पे। तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छी रिसर्च करके अच्छे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप एक अच्छी रिटर्न बना सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, कि आपका क्या व्यू है, कि आपको कैसे एग्जिट करना चाहिए किसी स्टॉक में, और आप आने वाले वीडियोस के लिए अपने टॉपिक्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.